the very weak investigation that they may seem to have agreed upon will just be an open and shut case. We are asking the government of India to open up, to be transparent, to live up to its own commitments. प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी लाखों करोड़ रुपए जो खा रहे हैं, भाग रहे हैं, इनके लिए वो क्या कर रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं। Long boisterous speeches in parliament will not take away from the fact that there has been obvious misgovernance, there's been acts of omission and commission, collusion, and prima facie people of India believe that something is on. दाल में कुछ काला है, कितना काला है, किसने काला किया, उसकी जानकारी के लिए एक ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोब होना चाहिए। इसलिए भारत के पार्लियामेंट की अगर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, उसके बनने से दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को, खासकर बीजेपी को, they must come forward and open themselves up for this sort of a investigation. This is the tenets of our democracy being questioned. When opposition leaders' speeches are expunged from the parliamentary records, it's unbecoming of a healthy democracy. When questions are not answered, there are no press conferences. पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब मिलता नहीं है, इंक्वायरी आप कराते नहीं हैं, जेपीसी के लिए आप मानते नहीं हैं, आप देश भर में प्रचार कर रहे हैं अपनी ईमानदारी का। So why don't we have this test and let's have an open JPC probe into the entire investigation? That's what we have been demanding. And I think as Congress party, we believe it is our duty as a responsible opposition to ask the right questions, to ask for transparency, for openness, and for asking the BJP to live up to its own words. I see the Prime Minister and the Government of India failing in all these regards. Therefore, public pressure must be mounted. We as Congress party have tried to come on the streets, upper house of parliament, Lok Sabha, everywhere we're trying to make sure that we speak for the interest of the voters, foreign investors, households in this country. Because if people are allowed to get away with this, then people will lose confidence in our regulatory systems, in our banking structures, in our financial strengths. So this is the right time where the BJP should come out and have JPC. Friends, I also think it's important to point out the Honorable Prime Minister had made a speech recently in Parliament and calling the 2004-2014 a lost decade. उन्होंने कहा ये एक दशक हमने खो दिया. I want to remind him and through you the country, 2004 to 14 was an era of unprecedented GDP growth. It was an era where 140 million people were lifted out of abject poverty, and we had robust growth in every sector. The economy was doing better than ever before. There was a reverse brain drain, unlike now, when high-worth individuals, intellectuals, qualified people are leaving the country for various reasons. At that time, we had a reverse brain drain. We had economic growth, unprecedented growth before. And India, what it is today, a large part of it is actually the strength we have, the leverage we have, the geopolitical strength India has today, which the current government is taking benefit of. That was really that decade which put India on the global map in terms of our IT sector, our telecom sector, our liberalized economy, and all of our export initiatives that we took at that time. So 2004 to 14 was also a breakthrough record decade because not only did we grow economically, liberalized policies, but we also had social sector programs that are paying us dividends today. Right to food security, right to education, right to employment, right to information, right for tribals. All those rights and fundamental issues were taken up by the UPA government, Dr. Manmohan Singh ji. And I think Dr. Manmohan Singh ji said that history will judge me far more leniently than what is being said about me now. We had the Indian nuclear US deal. The BJP actually was opposed to the US nuclear deal. They were opposed to direct benefit transfer. They were opposed to GST. They were opposed to FDI and retail. They were opposed to FDI and defense. And now they're doing exactly the same thing. रात के 12 बजे वो GST चालू करते हैं. DBT हम लोगों ने चालू किया, वो उसका क्रेडिट लेते हैं. हम लोगों ने ब्रॉडबैंड पंचायत में लेकर गए, वो उसका क्रेडिट लेते हैं. And for the last 8 years, what the BJP has done is given a slogan every 2 months: Stand Up India, Fit India, Make It India, Khelo India. Before one is able to take cognizance of what the new last slogan was, एक नया slogan आ जाता है. On the ground, delivery is what it is. We have the highest unemployment in the last 5 decades in this country. Highest unemployment. Petrol prices, diesel prices, LPG prices.
have never seen this increase ever before. And the government is actually curtailing the power and the financial contribution of the state governments. Therefore, the BJP has a lot to answer. I think we are seeing elections in Tripura, Nagaland, Meghalaya, and very soon in Karnataka. So I'm of the opinion that the Congress party will do extremely well in these elections. But Karnataka, I just want to add, is a state where the people of Karnataka, this is not just the Congress party, people of Karnataka are looking for a government that works for them. They're looking for a government that does not do polarized politics. They're looking for a government that is their government, that wants to create jobs, that wants to create wealth. Look at this. Look at the situation in Bangalore today, where we are today. What has happened to our city last few years? I mean, this is a government that really has a lot of debt to pay. People will seek that price, and I'm absolutely confident that as and when the election commission announces elections of Karnataka, there is no doubt in my mind that not only will we form the government, we'll have a single largest majority ever that the Congress party has secured, and we'll have a government that is for the Karnataka people. And that's all I have to say. If you have any questions, I'm happy to answer. Mr. Pilot, what do you want to say about the kind of promises which Congress is planning to give for upcoming elections? When you talk about Adani, there are many billionaires throughout the world are condemning, and they are saying that it may push back India to economic crisis. How do you see this kind of? I just feel that forget about the rest of the world. People of India are asking these questions, and it's not about an individual. It's about the system being misused. It's about the credibility of the institutions that are in question. It is a question what the SEBI is doing, what the RBI has not done. Regulatory bodies that were made for this particular purpose were overlooked. There is certainly a systematic sequence of events which have led to this massive increase in such a short time for a person who was ranked 70th or 69th in the world become number two. It's I mean, it begs the question that fine, you can. I mean, a lot of people do well, but was there compliance? Was there connivance? Was there wrongdoing on the part of the banks, the government institutions, the PS, and the government itself? There are many questions being raised. All we are saying is, without doing a blame game, if the question has come up, the best way to resolve it is to investigate. Let it be a thorough investigation. Let it be a JPC, and the truth shall come out. It is not that the JPC has never been formed before. पहले बहुत बार JPC बना था. But I don't want to go into what others are saying. I just want to speak for the people of India and what the Congress Party is asking the government. So the government has hit back at George Soros this morning also. Right now, Smriti Irani is also doing a press conference that it's an attack on India, that undermining India's might and power, and we will hit back at them. I think India's might and power is not resting on the shoulders of one or two individuals. It rests on the 140 crore people of this country, the farmers of this country who have toiled hard, who have got us independence, our forefathers, and the tremendous amount of energy potential that our people have today. So India's strength is its people and not 4, 5, 10, 20 individuals. So I don't really care what about anyone else is saying. I just want to limit myself to say that we as Indian citizens, we as political activists have the right to ask questions. In a democracy, it is the job, duty, the obligation of the ruling party to come up with answers. We are always saying is that if you have nothing to hide, why don't you have a JPC and a time-bound investigation where the truth shall prevail? That is a simple request, which I think is not something that has happened not before, can happen, but obviously there's something to hide. That is why there is hesitance in accepting the JPC. सर आपकी पार्टी जांच की मांग कर रही है। काउंटर क्लेम्स ये भी है कि राजस्थान में जो आपकी सरकार है उन्होंने भी बहुत कुछ अडानी को दिया, तो क्या आप उससे भी इसके बारे में राहुल जी ने पहले ही बोला था, जब ये आप सवाल पहली बार उठा था, कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश के अंदर कोई निवेश हो रहा है तो पूरी तरह 100% पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें अगर 1% की गुंजाइश है ऊपर नीचे की, उसकी तुरंत जांच भी होनी चाहिए। और जब वो सब पैरामीटर्स को लीगली ट्रांसपेरेंट तरीके से पास करने के बाद अगर किसी को काम दिया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर वहां भी गई है, जब जांच होगी तो सारी की जांच होगी ना। इसमें जब जेपीसी की जांच होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो फिर पूरी संस्था की जांच होगी और सच निकल कर आएगा उसमें। So it's quite a paradox. Now you're asking for a JPC. It sounds a little rhetoric because it's been asked for the last 2 weeks. You, in your state, you've been asking for a committee to look into questions in the league with the chief minister. There is no investigation in that, no committee announced. Isn't it a little paradox? You're confusing the issue. A joint parliamentary committee is a
national level, and it involves all parties. It's a set structure. There's nothing new. In various states where demands are made, that we can discuss later. But today the question is, why is the BJP government not agreeing to JPC? It's not my question. The country wants to know that if you have nothing to hide, तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? ऐसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत इशू है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, लेकिन ये जो इशू है, ये अभी चर्चा में है, सुर्खियों में है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है, बहुत मजबूत देश है, लेकिन इस प्रकार के प्रकरण अगर आते हैं तो सवाल तो उठेंगे। उन सवालों को खत्म करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। इतना हम लोग मांग कर रहे हैं और जांच करनी चाहिए। आज दबी जुबान में, मैं समझता हूँ बहुत मीडिया में प्रकाशित नहीं होता, लेकिन चर्चा है घरों में, लोगों के बरामदों में जो चर्चा करते हैं, इतने लाख करोड़ रुपए जो एकदम से गायब हो गए हैं, वो निवेश जो LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो लोगों की गाड़ी 26 करोड़ लोग ने निवेश किया LIC के अंदर। अगर उनकी गाड़ी कमाई को कल आशंका होती है कि कहाँ जाएगा, तो चिंता करना स्वाभाविक है हम लोगों की। सर, आपके राज्य में जो हुआ है, राजस्थान में 2 लोगों को मारा गया है, हरियाणा में, आपके MLA का बयान है कि FIR दर्ज होने में देर हुआ। इस प्रकरण के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मेरी सीमित जानकारी, क्योंकि मैं हवाई जहाज में था, ये हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस जॉइंटली इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। शायद एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन इस घिनौने क्राइम में जो भी इन्वॉल्व होगा, इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो भी आरोपी कहीं का कोई भी हो, उस पर तुरंत कार्रवाई करने के काम हमारी तरफ से। सचिन जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह के राजनीति राजस्थान में चल रही है, बहुत सारे आपके जो सपोर्टर्स पहले आवाज उठाए थे कि आपको सीएम के कैंडिडेट बनाया जाए, अब वो अभी भी फिर कह रहे हैं कि आप राजस्थान के विषय में मैं बात जयपुर में कर चुका हूँ, बेंगलुरु में इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों को। बात आप कहते हैं, दूसरी तरफ आपके एमएलए कहते हैं कि आप फिर से सीएम कैंडिडेट बनना चाहिए, सीएम फेस बनना चाहिए। प्रदेश के बारे में पार्टी को जो भी निर्णय लेना है, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हमारे कांग्रेस की लीडरशिप सही समय में सही निर्णय लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हम सबका सामूहिक उद्देश्य यही है कि हम लोग 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 राज्य हैं, तीनों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाए, हम लोग रिपीट हम लोग करें, और मैंने अपने सुझाव पार्टी को दिए हैं, सही समय पे सही निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अक्सर पार्टी की लीडरशिप तो ये कहती है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि आपको तो उसी भी नहीं। हम सबका सामूहिक यही है कि हम ये परिपाटी जो 30 साल से आ रही है ना, कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, इस परिपाटी को तोड़ना है। इससे पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट हुई है, दिल्ली में 3 बार हुई है, असम में 3 बार हुई है, राजस्थान में हो सकती है, और हमको जो करना है नहीं करना वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। ये कानून ने कहा सुलझनी चाहिए सब, राजस्थान दिल्ली में बात कर रहे हैं। आप बीजेपी के साथी से पूछो कि आप अडानी जी को क्यों नहीं बना रहे पहली बार। Sir, in today's budget they have announced that the BJP government will build the largest Ram temple in southern India. This is last ditch effort. That means if they are making that, I have not heard. If that's the announcement they are making, that means they are losing direction for sure. अभी 2 महीने पहले इनको याद आ रही है मंदिर मस्जिद की. That means they are not basing on development, on investments, on job creation, on economic growth. They want to again polarize, divide, and divert the attention of people of Karnataka on issues that, frankly, at the eve of the elections, make no sense. Why did not this government do this when they first took charge? Why they are resorting to these? Because they believe that they can't counter the Congress's campaign, the promises that we have made, the PCC has made, the AICC has made for women, amount of money we want to give every month to women in this household, in this state, and amount of electricity we want to give. So we are making commitments through a manifesto which even the Chief Minister in his budget speech can't counter. You can well imagine. He has the power, the resources, and double engine, as so they say. अभी डबल इंजन बोलते हैं लोग. एक इंजन हमने सीज किया शिमला में, हिमाचल प्रदेश में. सेकंड इंजन यहाँ सीज करेंगे बैंगलोर के अंदर. तो ये सब इंजन की बात सब फालतू है. होने वाला कुछ नहीं. सरकार कांग्रेस की बनेगी और पूरे बहुमत के साथ बनेगी. और मैं समझता हूँ, from what I understand, reports I have got from various parts, अभी तक इतना बहुमत हम कभी नहीं मिला होगा, इतना बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा. राम मंदिर ये जो आप कल राजस्थान में जो ओवैसी के रैली शेड्यूल है, उसकी इंफॉर्मेशन करोगे? राजस्थान में, पूरे देश में हम लोग संकीर्ण सोच के व्यक्ति नहीं है. किसी नेता को, किसी पार्टी को कहीं पर कैंपेन करना, इसका स्वागत है. आप आओ, अच्छी बातें बोलो, लोकतंत्र की बातें बोलो, अपनी बात को रखो. जनता निर्णय करेगी कौन सही कौन गलत है. लेकिन ये बैन कर देना या रोक देना, ये जो काम है, ये भाजपा ज्यादा करती है. हमारे यहाँ सब खुला है, कोई भी आओ, आपका स्वागत है. और जनता बहुत समझदार है, वो सब जानती है कि कौन किस उद्देश्य से का स्वागत है. और
जनता बहुत समझदार है, वो सब जानती है कि कौन किस उद्देश्य से कहाँ जा रहा है. लेट द पीपल डिसाइड. ये आ गए बोल बताएंगे आपको. क्वेश्चन ये है बीजेपी का कहना है राजस्थान it is Sachin ji's bird. He will reply. I will reply to you. बीजेपी का कहना है कि जब राजस्थान की सरकार ने वहां ये वादे नहीं पूरे किए तो यहाँ क्या गारंटी है कि वो चीजें पूरी होंगी. हम लोगों ने जनता का विश्वास इस सरकार जीत के बनाई थी. यहाँ की सरकार बनी है, जनता का विश्वास जीत के नहीं बनी है. पहली बात कैसे बनी आप जानते हो, और उसका भी हिसाब किताब होगा. तो इतिहास की जगह अब भविष्य में देखना चाहिए. सबके सामने है, हमारा चुनाव भी 8 महीने दूर है ना, हमारा चुनाव भी आने वाला है. जनता जवाब देगी. तो पब्लिक सब जानती है किसको कब वोट करना है. लेकिन कर्नाटक के संदर्भ में इतना कहना चाहता हूँ आपको कि अभी प्रधानमंत्री जी बार बार इधर आ रहे हैं. मैं भी नए एयरपोर्ट पे उतरा था, नया टर्मिनल, तो मुझे लगा इतना बड़ा अच्छा टर्मिनल है, इसका उद्घाटन किया है, तो बहुत मन में व्याकुलता देखने के लिए. वहां गया तो वहां तो अभी चिनाई चल रही है, प्लास्टर चल रहा है, खुदाई हो रही है, तो वो तो काम पूरा नहीं हुआ है. तो जल्दबाजी में उसको इनोग्रेट कर दिया कि कभी चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा. तो ये जो हड़बड़ाहट है, ये जो आपने मंदिर निर्माण की बात बोली है, ये जो टाइम से पहले हवाई अड्डों का इनोग्रेशन हो रहा है, ये जो बार बार दौरे लग रहे हैं, ये जो धर्म की, मस्जिद की, मंदिर की बातें हो रही हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि प्योर परफॉर्मेंस के ऊपर ये सरकार पूरी तरह फेल है. ये 40% सरकार है. इन्होंने पूरी कोशिश करी है कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों, चाहे बाकी लोग हों, और आरोप लगाने की कोशिश की है. लेकिन जब जन समर्थन मिलता है, जब पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, तो सब बातें पीछे रह जाती हैं. So your leader of opposition has been attacked by one of the sitting minister saying that for the Tipu issue and said that now Congress also. That's already been decided. But it tells you what sort of a narrative the BJP is resorting to. And वो उन्होंने क्यों कहा, किसने कहलवाया, ये भी जांच का विषय है. लेकिन बोलना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं बोलना चाहिए. Already is apologized on the floor of the house. People will decide like. दिखाते वीडियो. आप इस बार चाहते हैं कि आप एक youth base बने. मैं चाहता हूँ सरकार कांग्रेस की बने कर्नाटक में. राजस्थान में सर, Sir, तब राजस्थान में पहले राजस्थान में क्या था? हम चाहते हैं कि यहाँ पर हर जगह देखो ऐसा है, 24 के चुनाव दूर नहीं है. कांग्रेस पार्टी जब तक हम लोग स्टेट्स में नहीं जीतेंगे, तब तक हमारा जो गठबंधन है वो 24 का चुनाव जीतने में हम लोगों को इतनी आसानी होगी. These Hindi speaking states of Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh are important for us. We must win these states and then we have a formidable challenge and defeat the NDA in 24. Don't forget in 19 also, despite the Pulwama action and all that, the NDA got 39% votes. That means 61% people who voted against the NDA. The opposition must come together and the Congress has to play the pivotal role around which all of our partners and allies can come together. And these states will have the winning streak will start now. अभी हिमाचल में शुरू किया है, फिर नॉर्थ ईस्ट में जीतेंगे, कर्नाटक जीतेंगे, फिर हमारे 3-4 स्टेट्स आएंगे, वहां पे हम जीतेंगे. और 24 में ये लोग बहुत ऐसी, वाजपेयी जी भी रखते थे इंडिया शाइनिंग के चक्कर में, उन्होंने वो चुनाव वो हारे थे, वही भूल ये लोग कर रहे हैं. नोटबंदी करने के बाद, जीएसटी करने के बाद, इतना बड़ा रानी का स्कैम हो गया, पब्लिक सब जान गई है. 24 के अंदर हम लोग हमारी सरकार गठबंधन लोकसभा का चुनाव में जीतेंगे. पुलवामा की आप याद कर रहे थे सर. हो गया है. Thank you. अब चाय पानी पीते हैं, चलो. Thank you.